Hello guys, my name is Unnati and this is our concept of liberty by OP Gaba. So let's start. The concept of liberty, freedom donates a very important principle of political philosophy. Liberty is something regarded as a distinctive principle of liberalism, but freedom is acclaimed as universal principle. जो फ्रीडम है उसे माना जाता है कि वो सबका अधिकार है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है. फ्रीडम इज यूलोजाइज्ड बाय लिबरल आइडियलिस्ट एज वेल एज मार्क्सिस्ट थ्योरी. लिबरल भी मानते हैं, आइडियलिस्ट भी मानते हैं और मार्क्सिस्ट भी यही मानते हैं कि फ्रीडम जो है सबको चाहिए. Nobody quarrels mode of realizing freedom. Even the champion of absolutism, authoritarianism, and slavery pay lip service of to freedom, claiming that for ordinary man, submission of authority, regard as a symbol of some sort of excellence, is the best way to realize freedom. The champions of liberty have, however, always challenged the claim of privileged class to such excellence. The ideal of liberty has inspired many revolutionary struggle against despotism, the foreign regarments. It is significant that the struggle for the liberty is always informed by philosophy of equality. That is when some oppressed section rise against their oppressors as a peasant revolt or national struggle of independence. They challenges the elite superiority for their operation, demanding equality and justice on the universal principle of human equality. So, what is the nature of liberty? Let's start. Liberty is a quality of man. It is a man as distinguished from other living beings who demands freedom for evolves institution to secure it. Animal, birds, and insects are governed by the rule of struggle of existence and survival of fittest. These are two these are two things which is in mind of people, that struggles for existence and survival of the fittest. The fittest is the one physically strongest and cleverest. मतलब कोई उसकी पूरी बॉडी ठीक ठाक है और उसका वो तेज है. दे हैव नो एम ऑफ लाइफ. उनका कोई मतलब नहीं है कि कोई जिंदा है कि मरा है. अगर वो पैरालाइज्ड है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें, तो उसको फ्रीडम नहीं देनी चाहिए. ऐसा लोगों का मानना था पहले. बियॉन्ड मर एग्जिस्टेंस, man and Homo sapiens has distinguished himself from other living beings as he claimed to have an aim of his life. अब जो इंसान है उसका एक एम होता है लाइफ में, इसीलिए जो है होमोसेपियंस, ये होमोसेपियंस का साइंटिफिक नेम है पीपल का या ह्यूमन का हम कह सकते हैं. तो फिर उसको अलग ही रखा गया क्योंकि उनके पास अपना लाइफ का एम होता है, बाकी किसी के पास कोई एम नहीं होता. जानवरों के पास अपना कोई एम नहीं होता. ही हैज क्रिएटेड द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सिविलाइजेशन एंड कल्चर. इट परस्यूनेंस for of this aim. Animals are mere slaves of nature. Man has already learned to tame, control, and harness nature to serve his purpose of life. Freedom is the distinguished quality of man. Okay, now, however, despite the long history of man's civilization, he has to not rise fully above the rule of the animal kingdom. So long as the elders, the more experienced, more learned, more competent, more prudent, and more energetic men in society manage common affair in the common interest. Men do not lose their freedom in obeying their commands, but in actual practice, it is a mostly the selfish, strong, and clever men have managed to assume dominant positions and acquire special privileges in society.
As a result, society was divided into privileged and unprivileged section, the oppressor and oppressed, the exploiter and exploited, the dominant and dependent group. Because one the set of men assume power over his life of others. The privileged class have developed a vested interest in existing order. They have sought to justify that order by stressing its virtue. In this tendency may be found Aristotle define of slavery. Aristotle argued that men different from one another in their moral excellence, that the slaves were not full human beings capable of virtue. They were merely living tools. He suggested that slave receives the benefit of virtue solely by serving their masters. अरिस्टोटल का मानना था कि जो स्लेव मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो स्लेव्स होते हैं, वो जो होते हैं वो सिर्फ इसलिए बने होते हैं कि वो सर्व कर सके अपने मास्टर को. ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द सिस्टम ऑफ स्लेवरी प्रोवाइड लेजर फॉर द फ्री मैन विच वॉज एक्सेंसली फॉर द एक्सरसाइज ऑफ वर्च्यू. आपको अगर दिख ना रहा हो कि मैं कहाँ हूँ तो मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड. अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. Thus, the privileged class has also stood in defend the status quo change in the previous portion. It is only when the subject classes rise in revolt against injustice and oppression that they challenge the special privilege of dominant class and raise the slogan of liberty to press their claim of equality. Liberty is therefore a force behind social change. So, liberty is therefore a force behind social change. It is the voice of oppressed. It is the voice against injustice. It is the voice of re-establish human values as against the rule of animal kingdom. तो जो लोगों की पूरी सोच बन चुकी थी उससे अगेंस्ट आवाज उठाना ही लिबर्टी बन चुका था. नाउ स्कोप ऑफ लिबर्टी देखते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ लिबर्टी इन्वॉल्व द एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम बिटवीन. आप लोग सोच रहे हो मैं इंग्लिश ही पढ़ी जा रही हूँ, ऐसा नहीं है. अगर आप उस चीज़ को जिस स्पीड से मैं पढ़ रही हूँ अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा. बाकी थोड़ा बहुत मैं बीच में हिंदी बोल रही हूँ ताकि जो है आपको रिलेटेबल लगे. अगर आप ये चाहते हैं कि साथ साथ आप पढ़ लें तो आप पढ़ भी सकते हैं, उससे आपका. और इसलिए मैं जो है PDF पूरी शेयर कर रही हूँ और इस पे कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है गूगल पे कि कॉपीराइट का असली मतलब क्या होता है. तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वीडियो चल सकती है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. स्कोप ऑफ लिबर्टी. द प्रॉब्लम ऑफ लिबर्टी इन्वॉल्व्स द एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. The individual thought like liberal thought and societal thought or community thought of Marxist thought. The state comes into the pictures because it is the instrument of agency for regulating their relations. If the claim of the individual is stretched to an extreme in utter disregard of interest of society, liberty would be reduced to license. इनका मानना था कि अगर सोसाइटी वालों का मानना था कि अगर लिबर्टी यूज करने के लिए अगर आप एज अ इंडिविजुअल देखते रहेंगे या फिर एज अ लाइसेंस यूज करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि फिर आप कुछ भी कर सकते हो और किसी को भी आहत पहुंचा सकते हैं. एज अ लाइसेंस का मतलब आप कुछ भी करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है. लिबर्टी को एज आपने लाइसेंस यूज कर लिया. On the other hand, if the liberty of individual is increasingly restricted, it is supposed interest of society. The result would be अनकंडीशनल सबमिशन ऑफ अथॉरिटी. अगर हम ये ले लें कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को जो है हम एक तरीके से, सॉरी फॉर मैसेज, अगर हम लिबर्टी की, हाँ, तो अगर हम एकदम इंडिविजुअल पे भी अगर ना ध्यान दे तो फिर ये भी गलत होगा. हमें इंडिविजुअल की भी लिबर्टी देखनी पड़ेगी. इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू ड्रॉ डिस्टिंग्विश
Okay, distinguish between liberty and license on the other hand, and to fix the proper fortuner between liberty and authority on the other. So फिर this is a okay. Now interference between authority and liberty and license. Liberty under explanation, due restraint, authority and license. ये तीनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं. लिबर्टी डिपेंड ड्यू टू रेस्ट्रेंट ऑन अथॉरिटी. मतलब लिबर्टी ऐसी होनी चाहिए जो अथॉरिटी पे रिस्ट्रेंट डाले, ताकि अथॉरिटी जो है अपनी पावर का गलत फायदा ना उठाए. और अनड्यूज एक्सपेंशन मतलब लाइसेंस का जो है कम से कम यूज हो. कुछ लॉ बने जिससे जो है लिबर्टी एज अ लाइसेंस यूज ना हो. ओके, नाउ ये इसका मतलब हुआ. ओके, नाउ लिबर्टी एंड लाइसेंस. अब इसका मतलब समझते हैं. ये जो ओके, नाउ व्हेन लिबर्टी इज इंटरप्रेटेड as absence of removal of all restraint on the action of individual, it utter disregard of the interest of other individual. एक काम करते हैं, आज की वीडियो यहीं तक करते हैं. आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में. तो पढ़ते रहिए. अगर कुछ प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप नीचे पूछ सकते हो. मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की. सो मैं रीडिंग कर रही हूँ और साथ में आप भी रीडिंग कर सकते हैं मेरे. और अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड.